The story of civilization begins with water. 70% of the earth is covered by water. It is still considered to be a precious resource because only very small amount is fresh water. पुराने ज़माने में लोगों का पानी के साथ में रिश्ता क्या होता था? पानी ज़्यादातर स्टोर जो है वो वेल के अंदर होता था, कुएं के अंदर होता था या तालाब के अंदर होता था, जहाँ से वो लोग अपनी डेली नीड्स को फुलफिल करते थे। तो एक इंसान का और पानी का रिश्ता जो था वो बहुत क्लोज था। उसके बाद में जो कॉलोनाइजेशन हुआ और ये ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने हमें एक डेवलपमेंट के रास्ता दिखाया और हमें हर घर के अंदर पाइप कनेक्शन दिया पानी का। इस पानी के कनेक्शन से हम लोगों का जो वो रिश्ता था पानी के साथ में वो टूट गया। Paper, you will see that it's given as Khatra number. Khatra number means you give that number to a land, not to a water body. So water body is not identified. So you seal off the water body, you don't allow the water to go into that, and simply the water will stand on the floor. So this is the connection between actually how you destroy your environment and then complain about water logging. आजकल जिस तरीके से अर्बनाइजेशन बढ़ा है और जिस तरह से नई नई सिटीज़ डेवलप हो रही हैं, इससे बड़ी जो अभी कमी आ रही है वो प्लानिंग में कहीं भी इस बात का ध्यान नहीं रख रहे हैं कि हमारे पास वाटर लेवल क्या है। तो मुझे लगता है कि वाटर क्राइसिस और अर्बनाइजेशन का जो है एक बहुत बड़ा लिंक है जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। जैसे मोहसिना खातून ने अभी बोला कि वाटर का लेवल हमें पता नहीं है कि क्या है। आजकल जब वाटर का लेवल ढूंढने के लिए हम जाते हैं तो हमें कैमरा लेकर नीचे ज़मीन में वाटर का लेवल ढूंढना पड़ता है। वाटर का लेवल दुनिया में इस एरिया के अंदर दिल्ली और हरियाणा और राजस्थान या पाकिस्तान सबसे नीचे चला गया है। 500 फुट वाटर का लेवल नीचे जा चुका है। तो ये बड़ी एक खतरनाक चीज़ हुई है। Climate change leads to global warming and imbalances in the weather conditions. Change in weather conditions affects the hydrological cycle, which causes problems for humans as well as wildlife, which imbalances the ecosystem. It's the ecosystem. All the ecosystem are linked, and any animal, if it disappears from the chain, the food chain, the humans are going to indirectly be affected. The global warming and the climatic changes create imbalance in the hydrological cycle. The effect on water cycle either results in excess rainfall causing floods or very little rain thereby causing droughts. The availability of clean water is scarce, thus rainwater harvesting becomes very difficult. The relationship between the mankind and water is getting disturbed. We get 80% water from Yamuna, and it's 20% officially, 20% is on groundwater. But what is happening to this river? River is also getting polluted. We are not aware. We are throwing our waste. We are putting our sewage.
Water is precious. From schools, colleges to household, a message for water conservation should go so that misuse of precious potable water is stopped. Rain provides us free water so we can catch it when it rains. Usually all rainwater is wasted. Rainwater harvesting should be compulsory for all buildings, residential, commercial and government. We in our research have found that rainwater harvesting is not being done in the latest buildings also. Only state in India where rainwater harvesting has been made mandatory and is being implemented very strictly is Tamil Nadu. If a house, a residential colony or a builder does not do rainwater harvesting, their electricity and water connections are cut. Therefore, there should be very strict laws in Delhi also to see that rainwater is not wasted. Water is brought to megacities through pumps. The cost of making potable water is around 50 to 55 rupees per liter. There is an added cost also to make this water accessible to people in households. Constitution guarantees the right to water for every person. To provide drinking water, the government has to spend a lot on creating water infrastructure at macro level like watershed program in Rajasthan. Households.